Bodyline is a word in cricket. It was coined nearly a century ago to refer to a particular type of bowling. Hala? Particular type of bowling. This happened during the controversial series of matches between England and Australia. So England and Australia भितरे मैच चलथिला हला सेते बेले ए बॉडी लाइन गोटे बॉडी लाइन ए टर्म रो कथा आस्थिला हला इट वाज कॉइन्ड अच्छा you probably know that every 2 years England and Australia play a series of 5 test matches. So प्रति 2 वर्ष रे थरे टेस्ट मैच से माने खेलंती this has been the practice from the year 1861 though the games were not strictly in the form of test matches until 1867 जाए ए टेस्ट मैच हो नथिला किंतु सेमती खेलुथिले 77 परे 77 टू तमाने टेस्ट मैच खेलले in those days cricket teams had to travel for months by ship जहाज रे आस्थिले from one country to the other. News about a match was telegraphed each day and people read it in the newspapers. Telegraph है आस्थिला है और न्यूज़पेपर रे पिल लोक देखुथिले the next day but there was great competitiveness in playing the matches and great excitement and emotion among the public हला but competitiveness थिला खेलियो अच्छा winning or losing a match or a series was seen as a matter of national pride माने जातीय गर्व है national pride and the successful players were looked on as heroes है हीरो बोली भाबुतिले लोक माने है as they are today आज भी भाबुतनी लोग है in the series played in England in 1881-82 England रे खेला होतला okay England was defeated in a match played at a London cricket ground England हारी गला हला called the oval रे खेला होतला सेटा हारी गला it was the first time England had lost a match in England आगुर England केबे हारि नथिला England रे there was such jubilation in Australia jubilation माने खुशी पूरा है jubilation in Australia that a few persons put a satirical notice in a British newspaper है से माने गोटे satirical notice गोटे थट्टा कला भलिया notice देले है newspaper रे which said कौन कहला इधर कौन लिखा है English cricket is dead. The body will be cremated. Hello? Cremated. ताको पोतीबा. And the ashes cremated माने बोलते. Okay. ताको okay. Will be cremated and ashes will be taken to Australia. कहते इंग्लिश क्रिकेट को आम माने ताकू पढ़ू है पढ़ू क्रिमेटेड बुझीपार ना नहीं तो तार जो आसेस बाहर तार जो पाउंस ताकू नबू ऑस्ट्रेलिया है एमती कहले दिस नोटिस बिकेम सो वेल नोन दैट 2 years later the English newspaper
refer to the English team's voyage to Australia as a quest to regain the Ashes. Okay, so English newspaper ହେଲା से कौन कला इंग्लिश टीम रो भॉयज भॉयज माने जो यात्रा से सब जाउथले ना सेथिरे भॉयज माने जो जाउथला शिप रे जाउथले ना बुझबत ना नहीं यात्रा करी सेठी की खेलिया बुझिबे बोली बुझबेलो सो टू ऑस्ट्रेलिया वाज ए क्वेस्ट टू रिगेन द एसेस से लेखिला एतरे एटा गोटे क्वेस्ट टू रिगेन एसेस से कहला कि आमे जाउचू एसेस पुनी रिगेन करिया हैला तांको एटा हरेबू ऑस्ट्रेलिया रे बुझला ऑस्ट्रेलिया रे हरेबू ऑस्ट्रेलिया रे हरेगी तांको आमे पड़ी तांको पाउंस आनिबू हां when England team did win that series in Australia अरे इंग्लैंड में जीती गला it was presented with a trophy which was made of baked clay सेठी हला ताको गोटे ट्रॉफी दिया हला जोटा कि बेक्ड क्ले माने पोड़ा इटा रे ए पोड़ा माटी रे करायतला से ट्रॉफी टा had the shape of an urn हला जोथरे urn माने कोन गोटे कंटेनर इन व्हिच डेड पर्सन्स एसेस आर केप्ट हला तो सेही शेप रो गोटे माटी रो गोटे करा हेतला हला सेतरे रखा जाए कहार एसेस जोतरे रखा जाए माने पाउस जोतरे रखा जाए डेड पर्सन रो and was believed to contain the ashes of a bell. Okay, so ସେଥିରେ କଣ ଆସେସ୍ ଥିଲା of a bell मे भी गोटे बेल जो रखा जाए क्रिकेट स्टंप ऊपर बेल ये बेल छोट छोट एडिकी एडिकी काठी दिटा रखा जाए स्टंप ऊपर तार बोधे आसेस आउंस रखा हैला ता हैला गोटे काठटा को पड़ीकरी that gave the name the Ashes series to these matches तेणु ताकू से दिन को कहा जाए Ashes series and the urn became its permanent rotating trophy बुझलो तेणु परमानेंट ट्रॉफी सेटा अर्न ताकू दिया जाए हैला आज जाए दिया many years later the 1930-31 Ashes series played in England was won by Australia. Australia पुणी जीतिला कोटे इंग्लैंड रे more than the Australian win. However, what impressed the public and worried the English cricketers was the talent of a young Australian batsman called Donald Bradman. Don Bradman है ब्रैडमैन सो ऑस्ट्रेलिया विन कला इंग्लैंड रे हैला व्हाट इम्प्रेस द पब्लिक एंड वरीड द इंग्लिश क्रिकेटर कोन ता देखि वरीड हले आ कोटा इम्प्रेस कला पब्लिक को इंग्लैंड रे जाई जितले मैच was the talent of a young Australian batsman called Don Bradman. So Don Bradman असली जो हाँ ताकू कौन दे Don Bradman है In the 5 matches played in Australia 2 years earlier, he had scored 2 centuries and 2 half centuries. Okay. Aguru. It was clear that if he continued to bat with the level of ability and consistency, it was going to be very difficult for England to beat Australia in the years ahead. ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ପାରିବେନି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି नहीं କାରଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଯୋଉ ଖେଳିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଲା
से 2टा सेंचुरी मारथिला आ गोटे 2टा हाफ सेंचुरी भी मारथिला हैला आउ एबे तो एते बढ़िया खेललानी 5टा मैच से जितलानी सीरीज जीती गले तेणु the players and administrators of English cricket therefore gave a great deal of thought to the England tour of Australia due to take place 2 years later. 2 years later जो जिबे पुणी कौन करिवे हैला the selection committee appointed हैला Douglas R. Jardine, a leading batsman known for his toughness and given the nickname Iron Duke. तब Iron Duke डाकते हैला तेणु से डगलास आर जार्डिन को हैला बुझिपारछ एठी काई पकौछ ये नहीं कि एठी कोन पकौछ सेपटे अछि से घरे अछि a leading the batsman known for his toughness and given the nickname Iron ताको डका होला Iron Duke captain of the side तो captain करा होला there was a great deal of discussion on what strategy should be used against Australia so कौन strategy करिवे कौन plan करिवे in particular against डॉन ब्रैडमैन को हटाया पे ताको आउट करिया पे हैला जार्डिन टॉक टू हिज फ्रेंड्स अबाउट ब्रैडमैन्स बैटिंग एंड व्यूड फिल्म स्ट्रिप्स से देखिला फिल्म स्ट्रिप्स ऑफ मैचेस रिसेंटली प्लेड इन इंग्लैंड he decided that the best strategy was to bowl ताको bowling करिवो repeatedly fast bouncers हैला ताको बॉल रिपीटेडली फास्ट बाउंसर छाड़ियो हैं खाली बाउंसर पका मुंडू को आसो हैला माने बॉल टा पड़िगिरी ता मुंडू को आसो हैला ऑन दी बैट्समैन्स लेग स्टंप ऊपर पकेयो विथ सेवरल क्लोज इन फील्डर्स on the leg side गुड़े फील्डर को छिड़ा कर दो पाखरे कैच धरियो बोली क्लोज इन फील्डर्स को लेफ्ट साइड there would be good chance of the ball hitting the batsman body which would offset and distract the batsman तेणु बैट्समैन बॉडी रे बाजियो बॉल हैला से कले अच्छा possibly causing the batting error the batting error भी कर दो अच्छा the closing fielder should be ready to take advantage of any such error हैला closing fielder जिबे टिके error हैला माने कैच दबो बैट्समैन से धरिवे and in any case the presence of closing fielders एटा बॉल करू मसा बसी so the closing fielder should be ready to take advantage of any such error and in any case the presence of closing fielders would worry and distract the batsman though such bowling might be seen as intimidatory bowling da intimidatory माने बुझी पर बुझी देखो सो डरेला भाया एंड अनएथिकल सेमती बोलिंग करिया कथा नुह इट वुड नॉट बी अगेंस्ट द लॉ ऑफ क्रिकेट हैला क्रिकेट तो मना है ना जेमती पकड़ी परियोनी बोली दौच ठीक अच्छे बढ़िया है it would not be against the laws of cricket
It had been used occasionally to surprise the batsman and disturb his concentration. आगुरु occasionally यूज होता बेले बेले बॉडी ऊपर बॉल है जाडिन नाउ प्लान टू यूज इट रेगुलरली से कहला ना आमे ताको यूज करिया रेगुलरली सब बॉल आफ्टर बॉल हाँ इग्नोरिंग बोथ द रिस्क ऑफ इंजुरी एंड लाइकलीहुड ऑफ अ स्पेक्टेक्टर आउटरेज से माने ऑस्ट्रेलिया जाइछन ना ऑस्ट्रेलिया रे स्पेक्टेक्टर आउटरेज माने रागिबे माने रागिले भी आमे पकेबा he was fortunate to have a couple of good fast bowlers in the team की fast bowler थिले ना हारोल्ड लाराउड हला इन पर्टिकुलर तांको भितरु सी हला भलो थिला हारोल्ड लाराउड हला who could bowl with great accuracy हला they were made to practice okay ସେମାନେ practice କଲେ हला bowling leg stump bouncers for many hours in many days both then practice कले before the team set sail for Australia तापर टीम गला ऑस्ट्रेलिया बुझिपारल एति जाय थाओ आज